Good morning, students. How are you today? I hope you all are fine. Dear students, today we are going to learn in subject Science, chapter number 6, Our Body Parts. So, everyone take out your science textbook to page number 41. Now, see on page 6. Our body parts. Our body has many parts. Each part of our body has a different name and function. Every part of our body is important. You know how many parts in our body? Our body has many parts. Each part of our body has a different name and function. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और सबके नेम अलग अलग है और उसके फंक्शन मीन्स वो कार्य भी अलग अलग काम करता है. एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट. सब बॉडी के पार्ट्स हमारे इम्पोर्टेंट है. गेट सेट गो. Join each body part to its name. One has been done for you. This is your homework. Do you know? Where is head, chest, arm, hand, leg, eye, nose, stomach, fingers, knee, toes? Because you learn in senior KG. Okay, so this is your homework. Now, turn the page number 42. Hands. We use our hands to write, eat, hold, throw and paint. How can we write? We use our hands to write. Then eat, hold things, throw to things, throw ball. Okay, then पेंट. हम हमारे हैंड से क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन डू राइट आवर हैंड्स, देन ईट, होल्ड, थ्रो, पेंट एंड अदर एक्टिविटी वी यूज आवर हैंड्स. देन लेग्स. वी यूज आवर लेग्स टू वॉक, रन, जंप एंड किक. हम हमारे पैर से क्या क्या कर सकते हैं? वॉक, रन, जंप, देन प्लेइंग फुटबॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स. आवर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. Eyes, ears, tongue, nose and skin are our sense organs. Our body parts that help us know about our surroundings are called sense organs. हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो हमने को सब जानने के लिए, आजू बाजू की सब वस्तु देखने के लिए, सुनने के लिए, फील करने के लिए, देन टेस्ट करने के लिए, ये सब में जो यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. आवर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स. वी सी विथ आवर आईज. हाउ कैन वी सी? विच पार्ट? यस, we see with our eyes. We hear with our ears. We taste with our tongue. Which part we use taste? Yes, tongue. We taste new variety in food. Pizza, burger, Manchurian, then sandwich, then all junk food. Okay, we taste with our tongue. Then cold drinks. Okay, then candies, ice creams, we taste with our tongue. We smell with our nose. What we smell? Flowers, then new food.
हमारी मम्मी कुछ भी घर में कुछ नया बनाती है तो हम उसकी स्मेल हमें आ जाती है और उससे हम पहचान जाते हैं कि आज हमारे घर में क्या बना है. वी फील विथ आवर स्किन, वी फील कोल्ड, वी फील हीट. ओके, जब हमें ठंडी लगती है तो हमारी स्किन को क्या होता है, फील होता है. गर्मी लगती है तो फील होता है. कुछ हमारे स्किन पे कुछ क्या हो जाता है, जल जाते हैं, तो वो किसको फील होता है, स्किन को. सो वी फील विथ आवर स्किन. नाउ ग्रोइंग अप. A few years ago you were a small baby. Over the years you have grown up. Look at the pictures given below. These show how a newborn baby grows up over the years. Living things grow. Children grow up to become adults. Adults are grown up people. First, we are newborn, then 1 year old, then 2nd year old, then 5 years old, then 15 years old, then 25 years old. Okay, so children grow up to become adults and adults are grown up people. Okay, पहले हम छोटे बेबी थे, बाद में 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, बाद में हम लोग प्ले ग्रुप में गए, नर्सरी में, देन जूनियर केजी, सीनियर केजी में, देन नाउ यू ऑल आर स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, सो आपका क्या हुआ, ग्रो हुआ. ओके स्टूडेंट्स, अ न्यू बॉर्न बेबी फीड्स ओनली ऑन मिल्क. नाउ hard words. Body parts each different function important. Head, ear, chest, arm, hand, leg, eye, nose, stomach, fingers, knee, toes. Right, throw, pain, jump, kick, sense, organs, surrounding, skin, tongue, hear, taste, smell, feel, grown, adults. These hard words you should write in your science notebook only and one time. Okay? Do you understand, students? This chapter I hope you all are understand. Now exercise time. A. Tick right the correct option. Number 1. We use our hands to dash. A. Right. B. Walk. C. Jump. So tick on right. Number 2. We use our legs to dash. A. Sleep. B. Run. C. Ride. So we use our leg to, sorry, my mistake, this is wrong. Okay, so here run. Okay, this is wrong. So we use our legs to run. So tick on run. Then number 3, we use our dash to hear. A. Nose, B. Skin, C. Ears. So tick on ears. Now turn the page, page number 44. B. Draw a curve in circle to make smile. 4. Correct. Happy for correct statements and unhappy for incorrect statements. So first one, we can see things clearly in the dark. So this is incorrect. Okay. Then second, we smell a flower with our ears. So this is also incorrect sentence statements. And number 3, we taste food with our tongue. So this is correct statements. Now see, answer the following questions. Number 1, write any 3 activities you do with your hands. Answer, we can write, we can eat, we can clap with our hands. Number 2,
write any three activities you do with your legs. We can walk, we can run, we can jump with our legs. Number 3. How many sense organs do you have? Write their names. Answer. We have 5 sense organs: eyes, ears, tongue, nose and skin. So, these all activities. A. Tick write the correct option. B. Draw a curve in 2. Make 4 correct statement and incorrect statement. And C. Answer the following questions. These 3 exercises you should write in your notebook and textbook both. Okay students? Textbook, you write in textbook. This is your classwork, and your homework write in notebook. Okay? Now, fun twist. Draw the missing part in each face and complete its name in the blanks. So first, which part missing? Eyes. So, draw the eyes. Then nose. Then lips. And then ears. Okay. Now, do and learn. Color the correct boxes to describe yourself. Also paste your picture in the given box. So, this is your homework, because this color the correct box to describe yourself. So, you can do yourself this exercise. Okay. Now, life skills. You are waiting for the bus at the bus stop with your mother. Suddenly you see a blind man waiting to cross the road. What will you do? आप आपकी मम्मा के साथ आप बस स्टॉप पे खड़े हो, वहाँ पर बस के लिए वेट करते हो. तब सडनली आपको क्या देखता है? एक ब्लाइंड पीपल. ब्लाइंड मीन्स यस, अंधे. मैन, एक जो कौन आदमी जो अंधा है वो दिखता है. तो आप वेटिंग टू क्रॉस द रोड, वो क्रॉस रोड करने के लिए वहाँ पर खड़ा है. तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? नंबर 1, यू विल आस्क योर मदर टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड. ये सेकेंड, यू विल वेट फॉर समबडी एल्स टू हेल्प हिम. तो आप क्या करोगे? यस, नंबर 1, यू विल आस्क योर मदर टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड. दिस इज first is correct and second is not correct. Okay students, do you understand all exercise? I hope you all are understand. Thank you. Bye bye. Take care.